इन कोई पूरे इंडिया भाई कंपनी का नाम कौन सी कंपनी? लौड़ा अच्छा हाँ, वो एजुकेशन वाला ना? आई गेस हाँ एजुकेशन वाला ही है वो। और स्ट्रीम देख चालू हो गया कि नहीं? हो गया हाँ चालू। नोटिस आ गया ना हाँ बॉयज। ठीक। रोम रोम भाई मार्केट एज यूजुअल डेड। टिडम टिडम ओके। मार्केट ब्रेड तो खराब है। स्कैनिंग करते हैं। लेट्स टू। इधर लाइव तो कर अच्छा हाँ लाइव करना है। बैच। एनीवन ट्रेडिंग ऑर्डर फ्लो नहीं यार वी डोंट ट्रेड ऑर्डर फ्लो अबे बंद कर दी चालू कर दी वो वीडियो ऑन कर लिया भाई बस। ओह स्ट्रीम पे दिख गया कैमरा ही नहीं है कैसे दिखेगा लोल। ये शीट लीप ठोक तो रही है लीप ठोक। अरे 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 और ये ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। कौन सा स्टॉक है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इजंट इट स्लो मूवर बैंक है ना बैंक चल रहे। मैं यहाँ भी देख रहा था इसको। ये वाला जोन साइड बार हट गैप अप यप। मैंने एक्चुअली गैप उतना अप एंड ये मूव नहीं किया मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि लो एरिया है ना। लेकिन चल गया साउथ इंडियन बैंक में डाल दूँ ले लिया उसके अलावा। सारी ETF what the fuck। श्री राम पना बैंक। आई मीन सेटअप्स तो है नहीं एक तिलक नगर जरूर सेट हो रहा था बट बहुत नॉइज आ रहा है भाई तेरे माइक से हाँ वो बैकग्राउंड में टीवी एक सेकंड। ये अब नहीं आएगा। बाहर आएगा देख। नहीं नहीं और गुड LG ब्रोस ये VP है बस ट्रैकिंग डाला है देखते। LG ब्रोस LG बालकृष्ण। एलजी बाला कृष्ण ब्रोस गलत एलजी पंप कर दिया एफआईएल ये TradingView बैंक सेट हो सकता है। ओके सेट मतलब वो बहुत बड़ा बेस नहीं हो रही है वही थोड़ा ब्रेकआउट फेल टाइप ही है बट चलता है ये शेकआउट में भी काट देगा फिर जाएगा। पोजिशनल ओनली नो स्विंग। करोड़ सब मर गए। इनका ये सब जो
सारे नीचे हैं, 20 के नीचे कट कर चुके हैं, 50 बहुत नीचे नीचे है चल स्टॉक। जाएगा। एपेक्स फ्रोजन में बढ़िया है, मस्त। कर्नाटका बैंक वही ना, बेरिश हो गए भाई। स्टॉक्स बेरिश। ओके, पीपल जीपीपीएल। ठीक हो ओह गया, माय यहाँ गॉड। अलग दिखा रहा ये क्या है? है, ये देखिए ऐसे दिखा रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसे दिखा रहा वही वही। है। सीखो ETFs। सिटी यूनियन बैंक, कैनरा। मैं तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज देख रहा हूँ अभी भी। हम्म। ब्लिस भी मिला है एक, बट पता नहीं मुझे उस कैसा है ब्लिस जीवीएस। आई डोंट थिंक ट्यूसडे तक कुछ होना है, वेडनेसडे को ये फिर एग्जीक्यूट होगा। प्रीवियस डे आई क्लोज। हाँ वही, बेरिश ही है। क्या नेक्स्ट वीक या ओपनिंग एमबीए क्या होएगा। था? एमबीए देखा ही ना। डाउन है, और क्या MBA तो भाई 200 के नीचे ही है, क्या देख रहे हैं MBA। नो, बेरिश तो नहीं हो गया? बेरिश ही है। नहीं हुआ। बेरिश नहीं है, डल है बस। कहाँ है भाई, भाई ये 83 है MBA। बट पता है, 52 वीक लो बढ़ गए हैं, मतलब ज्यादा लग रहे हैं 52 वीक लो। तो हो गई। 17 को हाई ज्यादा लगे थे, अभी लो ही लग रहे हैं ज्यादा। 82 है भाई MBA, डेड। नहीं बट बेरिश नहीं हुआ। वो डेलो वाले रूल के हिसाब से तो बेरिश ही है। ओनली 36% स्टॉक्स आर अबव 20 में। आधा मतलब आधा से ज़्यादा मार्केट नीचे है। हाँ, 50 के ऊपर है, लेकिन अभी भी 60 है नहीं, कितना है देखना पड़ेगा। वो कौन सा था, एटलस? श्रीनगर, ये बस ट्रैकिंग के लिए, इसमें कुछ है नहीं। श्रीनगर गोल्ड, JSW सेंट नीचे ख़त्म हो गया। डेमो 30% स्टॉक्स हैं ऊपर सिर्फ, लो 20 उसमें के। से ये सर्किट वाले ज़्यादा हो गए 10%, हम्म। मतलब 20% ही है। ये कौन सी बात। भाई 30% डाउन है तो मतलब एक और दिन अगर नेगेटिव आया तो हम बेरिश हो जाएंगे। मेरे को ऐसा खराब लग हो रहा है जाएगा ये और इंडेक्स से ज़्यादा गिरेंगे नहीं, मे बी, क्योंकि स्टॉक से इतने स्टॉक्स ही ऑलरेडी पिट रहे डाउन हैं। है वही। वही, अब तो 52 भी हाई भी नहीं लगा रहे, लार्ज कैप भी करेक्ट होने लगे हैं। लास्ट के सेलेक्ट वाले पुल बैक ले रहे हैं बस, बाकी फोर्टी स्ट्रॉन्ग हो परसेंट गए हैं। स्टॉक्स 40% स्टॉक्स अबव 200 SMA। और ये भी जो गिरा है वो लार्ज कैप पुल बैक ही तो था, PSC बैंक ये सब जो चले हैं वही पुल हाँ बैक ही, इसीलिए हाँ इंडाइसेस गिरा। नहीं तो रोज तो नॉर्मल ही होता वही। है। गिरावट तो नहीं है बट कंसोलिडेशन है बस। आई मीन वी आर स्टिल इन अ बेयर रन। टाइम करेक्शन है। यस, क्योंकि ये
50 में के नीचे ही है अभी भी स्टॉक, 35% ऊपर है बस। तो अभी मेजॉरिटी स्टॉक्स आर डाउन। डेड डेड कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट लोल। जिंदल फोटो एक और है वो जो ऐड किया है बस ऐसे ट्रैक जिंदल फोटो। लिक्विड है बट आ, नहीं देख रहा हूँ। और टाइम दे सकते हैं शायद इसको। नॉट अ बैड सेटअप, बट एग्जीक्यूटेबल नहीं है ये भी। क्यूपिड पागल हो गया। ऐसे ही है वो जो 10% 20% स्टॉक है ऐसा ही है। ओए, बढ़ते रहो बस। ये ऐसा इंडो था लोल। जी आर मूवर, इंडो थाई भी ऐसी है, सर्किट सर्किट। ट्रेनेक्स में बेस अच्छा है। करने के लेकिन 5% ना। हाँ वीकली पोजिशन नहीं नहीं, 10% है। 10%, 10%। हो गया गाइस कुछ नहीं मिला सो जाओ। क्वेरीज में चलते हैं। नो ट्रेड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ब्लिस ब्लिस जीवीएस देखना, पता नहीं क्या क्या हुआ था, क्या देखिए। देखी व्हाट इज दिस। भाई इसका नेचर यही है मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। याद है एक बार किसी ने यहाँ पे लिया था ना लोग। कब लाइक ट्विटर ने पूरा घुस गए थे लेकिन स्पॉट वाले। हाँ हाँ हाँ, कौन सा दिन और था वो। डिलीट कर दिया था यहाँ ट्वीट। वो ये वाला ही होगा। या तो ये वाला होगा। ये देख भाई ये क्या ये बेसिंग वही करते वही, लगते हैं फटेगा नहीं। कुछ भी कर रही है। ये देख उधर है ओ माय। पता नहीं क्या होता है इसको। ऐसा ही चलता है ये देख वीकली में भी ऐसे ही है। कुछ भी हो सकता वही वही है। वही। ये नैस्डैक 15 मिनट चार्ट। लेंस कार्ड देख, लेंस कार्ड NR5 बनाया है। NR5 NR4 जो भी बोल रहा भाई है। इस बार लेकिन अर्निंग्स भी आने वाला है, ढूंढने दे 29th को अर्निंग्स। या 1 आवर कुछ नहीं 15 है तो इसमें। कुछ नहीं है। कैनरा लाइफ, मेरे को लेफ्ट साइड नहीं पसंद, देख ले। कैनरा लाइव वो है मेरे हिसाब से वो हो गया अब उसका जो नेचर है ना ऐसे ही है चॉप चॉप। हाँ, ये वीक देख के ही मुझे थोड़ा ऐसे वो। ये सारे विक्स वही है इसका ये। ये बाकी देख ये 1 आवर में भी विक्स बहुत बट स्ट्रॉन्ग भी है ये। वही तो, विक और उसका ही चक्कर है। कुछ नहीं है भाई सच कुछ क्या डेड में ये होता है इसको निकालना भी नहीं। कुछ नहीं है स्टॉक भी नहीं है ना ही मार्केट ऊपर। दोनों क्रेजी कॉम्बिनेशन। जीरो स्टॉक्स। जी जी जी। NRB बेरिंग देख, देख देख NRB बेरिंग। वो भी तो ऐसा ही है तो माइक्रो ये भी नेचर ऐसा ही तो है बट ठीक है बेसिंग। हाँ कुछ नहीं है। बस कुछ है ही नहीं यार, डेड मार्केट। आई मीन क्वेरीज पे करना ही नहीं कुछ है। नहीं है। अच्छा नहीं
क्या क्वेरीज कुछ क्यूपिड देखने बोल रहा है सॉर्टिंग। क्यूपिड तो ऊपर ही आ गया। फिर भाई पागल हो गया। होता है ये क्या बेच रहे, डायमंड बेच रहे क्या लोग? होता है ये क्यों मार्क किया मैंने? ठीक है। नहीं ये क्या है, व्हाट इज अब दिस? अब तो ये पुल बैक ही लेगा। ऐसे ही लग रहा है भाई। पुल बैक ले बोल रहे हैं नहीं बहुत। भाई मैं बोल रहा हूँ भाई एआई कुछ भेज रहा है बनाता मतलब। भी तो देख क्या है। हाँ एआई एआई कुछ भेज बंडल रहा है थोड़ी इसमें। बनाता है। नहीं नहीं इस भाई इसका जो ये है ना, जो लीडर है इन सेक्टर में, वो उसका नाम बोलिए मैनकाइंड। वो भी नहीं मैनकाइंड उतना। वो भी नहीं चलता इतना वही। इन लोग ये लोग एआई बेच रहे हैं भाई इसमें, मैं बोल रहा हूँ एआई घुसा दे। उतना भी कुछ नहीं हुआ भाई देख। ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब 20% हुआ है बस ग्रोथ। 30%। तो फिर क्यों इतना क्यों जा रहा है मे बी ऊपर? लो फ्लोट या कुछ होगा भाई इसे। पक्का। इसमें पता है एक पब्लिक था उसमें, हाँ। मतलब वो बस शेयर होल्डर थे, मतलब जैसे ये जो एच एन इन्वेस्ट कर दे राइट, उसको हम्म। प्रमोटर बना दिया इसमें। वाह। हाँ ये जो ये यही है आई थिंक, आदित्य कुमार हवाल से पता नहीं। ये टी एफ सी आई में भी किया था इसने। टी एफ सी आई पता है क्या हुआ? टी एफ सी आई हम्म। इसने लिया, स्टार्ट किया पब्लिक से, इसको प्रमोटर बना दिया फिर। वाह। हाँ मतलब इतना स्टेक, एक स्टेक से ज़्यादा हो जाता है ना, यू कैन बी इन बोर्ड मेंबर्स। हम्म। ये अपोलो माइक्रो में भी था आई थिंक, ट्राई किया होगा नहीं मिला होगा। बेच दिया इसने। नहीं तो भाई इसके जो भी स्टॉक देखा है अपोलो माइक्रो सब, मल्टीबैगर क्यूपेड अक्वायर कर लिया, मतलब मेंबर बन गया। मानक से अब एकदम में सर्किट हो गया था, ये भी सर्किट था। ये भी पता नहीं क्या है ये भी, ये भी ऐसा ही चला था टी एफ सी आई। मोटर होल्डिंग ये इंक्रीज देख अबव फिफ्टीन द परसेंट हैक। ये खरीद रहा है ना ये पब्लिक हाँ वाला जो बोल रहा है ये। ये फ्लोट नहीं है भाई, आई फील लाइक ये जो हो रहे हैं ना, प्रोमोटर और पब्लिक ही पंप कर रहे हैं, मतलब ये इतना 30% स्टेक होल्ड कर रहे हो, प्रोमोटर 40% होल्ड कर रहे हैं, 70% के पास ही। ये कर्नाटका बैंक बाय कर रहा है अब, देख रहा है? साउथ इंडियन बैंक हाँ। भी बाय कर रहे हैं, देख। इसने वही लेवल बाय किया क्या मैंने जब साउथ बैंक। 20 अक्टूबर, ये देख। बाय करते थर्टी कितना, फाइव बाय थर्टी बाय फाइव बाय बाय, इससे भी बैन करो, थैंक यू, इन्वेस्टिगेशन करो। सर से भाई पूरा। ये देख कर्नाटका बैंक, ये भी पंप हुआ था पता है कर्नाटका में। देख कब बाय किया इसने, 21st। हाँ ये पंप में ही बाय किया था उसने। ये देख रहा है? हाँ। ये भी ऐसे हो जाएगा आई थिंक। हैं? साउथ इंडियन बैंक भी देख, ये बैंक्स ले रहा है अब। बैंक्स कब लिया इसने साउथ इंडियन? एक वो सेकेंड। ब्रेकआउट वाले दिन बड़ा ब्रेकआउट आया था ना। 20 20th को अक्टूबर ये देख, इसने पंप की। 35 पे लिया उसने 35। हाँ बीच में घुस गया मतलब। लिंक अच्छा, मतलब बीच में घुसना तो मतलब वो उनको लिक्विडिटी तो वहीं मिलती है, इतना बड़ा क्वांटिटी लेने। वही वही। जब बहुत बड़ा, अच्छा नहीं है तो चल स्टॉक प्राइस है, स्टेक वाइज कितना होगा, कुछ नहीं होगा। सो गाइस कर्नाटक बैंक, टी एफ सी आई है, ये बन जाती है। आई मीन देयर इज नो गारंटी ना। जो भी लिए उसने, इनफैक्ट इसमें ना कम है, फ्लोट कम है इसमें, कर्नाटक में आई थिंक। ये रिपब्लिक के पास ये सब। चलिए इसमें फायदा है साउथ इंडियन बैंक, सब पब्लिक के पास। ये देख भाई, ये देख के देख रहे हैं पैटर्न, पब्लिक ये सब। हाँ, बढ़ रहा है। बट इसमें एफ आई डी आई है, बट पब्लिक भाई जो 70-80% पंप हो जाते हैं भाई लिटरली। टू मच भी अब। इमेजिन। एक सेकंड इसका बाइंग देख रहे हो, क्यूपिड जब इसने बाई किया था, कब से लिया? खोलना वार्निंग उसका हाँ। टी एफ सी आई मार्च 2024, ओके। नहीं तो किसी यहाँ पे होगा। ब्लॉक डील किया था 28 फेब। कब है? 28 फेब 2024, ओके। 2024।
ये बॉटम भाई, what the fuck? नहीं नहीं 2024 अच्छा हाँ, नहीं 2024 ही तो, अच्छा नहीं 5 इधर। इधर बाई यस। कर, टॉप पे बाई कर ले इसको, मतलब यप। 20 28। फिर मतलब वो 1-2 साल हाँ बैठा रहा फिर उसमें। यस यस। यहाँ पे लिक्विडिटी आया हुआ है इसका, 40% डाउन देखा, अब जाके इतना पंप हुआ। क्यूपिड दे क्यूपिड। आई मीन इसने डबल अभी अभी नहीं हुआ है, पर ठीक है। तो क्यूपिड, क्यूपिड कब बाई किया इसने, क्यूपिड कहाँ बाई, दिसंबर 2023, एग्जैक्ट नहीं है, आई थिंक ब्लॉक डील होगा ये, दिसंबर 2023, बहुत पहले होगा ये, दिसंबर 2023। वो वॉल्यूम में बाय किया ओ होगा। ये रहा, यहाँ बीच यहाँ हो पे रहा देखो, वही। यहाँ भी देख, लेकिन ये ऊपर जरूर गया फिर बाद में। और ऊपर भी। हम्म, बाप रे, बहुत वॉल्यूम में बाय किया। वही वही मिलती है लिक्विडिटी, मतलब उसी नहीं बनाई है, वही 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 वही। जब लोग बेचते लेकिन हैं। फिर भी सेल नहीं किया ना, आई थिंक उसने स्टेक अप ही किया है, अभी भी हाँ 32% पे है वो। बस बाई करते ही जा रहा है, हाँ, छः करते सौ ही जा रहा परसेंट मल्टी बैगर है इसका, मतलब ये देख, रिसेंटली बाई किया इसने किसी, नहीं तो है। वही हाँ, स्टेक, पंप पंप कर रहा है क्या? मेजर स्टेक यही है, फर्स्ट जो अभी इसने लिया है, उसके बाद थोड़ा ऐड कर लिया। कर्नाटका बैंक अभी ले रहे हैं, तो बॉटम तो नहीं बनता, बट यस आई थिंक कर्नाटका बैंक नीचे है ऑलरेडी, मे बी ये रिटर्न देगा, और साउथ इंडियन थोड़ा ऊपर ले रहा है, तो ये नीचे आएगा थोड़ा, टीएफसी है जैसे। देखते हैं। यहाँ पे आया था वॉल्यूम, अभी तो ब्लॉक डील इम्पैक्ट शेयर जम रहा है आपस, ये देख इसने ही होगा, इसने ही किया है ब्लॉक डील। हाँ, नेगा बट क्या फायदा, मार्केट तो डाटा बाय बाय। कर छः और कुछ है क्या क्वेरी, नहीं तो बंद ही करें। 300 400, भाई बुक हाँ। वैल्यू की इतना नीचे है भाई, ये देख 300 333 है, दो। ओए भाई मस्त ग्रोथ कर रहा है, आई मीन नहीं सेल ग्रोथ कर रहा है, ईपीएस ग्रोथ अच्छा है। एफआईआईस, पोलर इमर्जिंग मार्केट्स, ये खरीद रहा है, डीआईएस कॉन्ड म्यूचुअल फंड, बस यही है, बंधन म्यूचुअल फंड। आई मीन इसके पास आई थिंक 1% स्टेक भी नहीं है अभी तक, मे बी कितना है, मैक्स 7.7 5.5 प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स कुछ नहीं, प्राइस टू बुक आधा है, कितना है, 0.6 है, 0.8, सस्ता ही है भाई ये, वेरी सस्ती, लेकिन ऑल बैक मार्केट डेड, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। नो, नो स्टॉक्स नो ट्रेडिंग, बंद है अभी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे ही है, क्या पता ब्रेक कर दे। डिप्स पे ले,
Can you turn my mic on? Hello, Rohit. कहाँ है भाई वो? इना चाहिए, इनवाइट किया है, देख लो. Hello, hello. Am I audible? Yeah. Sorry. So yeah, I had a couple of stocks that I wanted to view on. Technically, the first one is L&T. Ask an interview, bro. L&T Finance. No. Okay. Actually, L&T Finance, L&T Mind is सब similar हाँ. उस पे setups पे ही चल रहे हैं. हम्म. Would you consider this as a green for tomorrow, as in Monday, or देखो मेरे सेटअप से हिसाब से तो मैं लार्ज कैप ट्रेड नहीं करता, और मार्केट बहुत ख़राब है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ट्रेड नहीं करूँगा. बट breath खराब है सेटअप, क्या? यस Breath. यस, बट ये सेटअप में नहीं लेगा. L&T. दूसरा क्या है? L&T फाइनेंस. Sorry, कि setup पे क्यों नहीं मिलेगा? बार ये बताओगे? क्योंकि इसमें Apart मेरा, from large cap नहीं है. हाँ हाँ, तो क्योंकि इसमें मेरा 1 आवर नहीं है. अगर होता तो यही एंट्री हो जाता. ये जो दिन वन है ना आवर नहीं है 28th, मतलब? 1 आवर जो मैं देखता हूँ, राइट, VCP पैटर्न्स, हाँ हाँ. वो नहीं है यहाँ पे. देर वॉज अ 1 आवर कप एंड हैंडल इफ यू सी दिस होल थिंग. अच्छा. तो इसका एंट्री मोस्ट लाइकली यहाँ कहीं हो जाता, और ये अभी And then चलता है what would एक्चुअली. have your TP? इसका ADR सिर्फ 1% है इफ यू सी, राइट, 1.11. सो आई वोंट टेक मोर देन 1% ADR इन दिस, 1% स्टॉप, समथिंग लाइक दिस. Um, तो ये मे बी कॉस्ट पे चल रहा होता इनफैक्ट. तो But I वन would इज have टू वन का. exited if, since market break is bad, right? So I would have exited this at And cost your only. profit all time Profit high. would be same 2 hour, but it didn't अच्छा. do right here. Got it. Yeah, but I won't trade this anyway. Interesting. Hmm. I think L&T Finance मैं and इसको यहाँ ही देख रहा था, यहाँ पे, for positional only, for positional, hmm, for swing no. interesting. Um, okay, that was one. The second one is Shriram Finance. Sundaram Finance. L&T. Shriram Finance. Just Shriram. Yep. Shriram Housing Finance. SHRI. Oh, oh. हाँ हाँ. Finance Limited. So this No, is yes, maybe. again large cap. हाँ. So I won't trade this either. Again, I was saying this positional here only. This zone, this weekly base, this pattern you have here, this one. I see. Anything large cap only see weekly, no daily or swing. अच्छा, weekly देखो. But if you want to trade their futures, हाँ. um, then would you recommend I still go weekly, because then there is a time limit for futures, right? So you get, There is, it's but either November, December. I know a friend of mine. He does options, stock options and futures, VCP Uh-huh. only. But I don't know. I haven't tried it, I see. so I have no Also, idea. around VCP, is there a good resource online free that I can go through Your that mic covers volume it? is low. Can you? Is there any good resource online, on YouTube or some other platform that I can explore VCPE from volume Mark placement of? Binamini, right? You can check Yeah, his Mark videos Benjamin. out. There are some Okay. interviews. Yeah, I read his book, but
Yeah, I was still His interviews are with Trade Line. trade line, is it? Yeah. I'll check them out. Okay, in the meanwhile, I have some more stocks. Let me check. Again, this is the next three are large caps: Mahindra and Mahindra, M&M. Hello, hello, am I audible? Hello, hello, hello. Nice. Can't hear them though. Or any other queries? Yeah. Can you look at Mahindra and Mahindra, M&M, Which stock? Mahindra and Mahindra, कौन सा? M&M. M&M. Hmm. The auto one, right? हाँ, Huh. same. Same thing. It had a weekly base right here. This one. Again, I won't swing trade. I can see the ADRs and everything. And if you just moving in a channel here, and if you just take this out, some channel itself. This is why I don't trade them. They move really slow. Positional is fine if you want to take them. There was a positional setup, but again, that how much would have that given you? Let's say you wanted some only 20%. Interesting. Give me a sec. Yeah, what about GMR Airport? JMR. This also had a weekly setup. If you see everything 3T VCP. This is a Alright, VCP again. I'm just a little late, that's all. Again, this is a low ADR stock, right? In any low ADR stock, I only see in weekly only. Even this had a daily VCP actually, daily setup. But I wouldn't again trade this. Same thing again. This picture book like VCP. Even in the book you could see it. Whatever the book you read, mark winner when you want. Where's that thing, bro? Indian trade like champions. So this is 35. This is your simple 12%. 3T VCP. But on a weekly basis. This would have, you would have get somewhere here entry. 12% currently running. With the view of going it higher, taking it higher. Fair. The final one is Torrent Farm Power. Which one? TORNT. Torrent Power. Torrent Power. Farm. TO. Yeah. One second. Torrent Farm. Yeah, see again, weekly only. Arey, Bhai, you can see the markings. I already marked this. Again, this is a very choppy nature. If you can see, right? It wicks a lot. Low ADR. But I was looking for weekly only in this. After this base breakout, right? This VCP base breakout, it made a bullish flag and then it did go up, but it engulfed it back down after this earnings. True.
everything almost I think 90% the stocks you gave me have weekly basis, but I wouldn't trade them in daily, I like see. for Yeah, swing. my idea was holding some positional trades for a week or two and then probably let it go. Uh, but yeah, yeah, these were all my stocks. Yeah. Any views on tomorrow, as in Monday? Which one? About Nifty. Nifty. Mm-hmm. I don't do indices, but could pull back maybe. Who knows? Yeah, a lot of people are suggesting a pullback Only in large Nifty. caps are moving, like banks. And Hmm. if you see this week trade, right? I only traded one stock. It's South Indian Bank, and both times it did TP. I see. What was your risk reward? Could you walk me through one of your trades? My risk. Um, could you, yeah, your trade. Oh, you wanna? Do you wanna? Okay. Hmm. Have a. Okay. Right. You wanna see it? You mean? Mm-hmm. So first day I entered here. Okay. At this closing I entered, and then my stop was basically 1.5%, and then So I you took, trade in large volumes, is it? yeah. So I took 2 hour here, and then again it set up same thing, and then I took CTC here, but it did TP because I don't know. I don't, probably my mistake here. It didn't do CTC. If you can see this here, it almost did, but it didn't. But I exited, and then next day it did TP. So these are the two things. I see. So you look for daily setups in some sense. Which one? You look for daily setups Yeah, and daily, then trade them. daily What and one about hour. IPOs? Because IPOs often make such setups. Yeah, IPOs we traded Bluestone, Anand Rathi and stuff. I think Oh, Anand okay. Rathi we traded one Yeah, I time. also traded Anand Rathi. Yeah, I that did sort of well, wanted right? to invest, but yeah, that went well. I missed Grow Grow, and I didn't have a setup there. yeah, true. Here, this PPAC area. prefab also I missed. So Prefab, yeah, prefab at prefab had a setup I had drawn prefab I and didn't trade because it had earnings or results. So oh, okay. Yeah, I also entered looking at that as well. yeah, Hold on, I these have are an some IPO good stocks list. here, right? I Yeah, wanted to yeah, enter yeah. it, but again, see this Same, thing. same. If this I had wasn't drawn the there, same line. yeah. So, I didn't imagine it would gap up, but it did. And then it didn't stop. This was a really great setup, but what can we do? Yeah. Earnings was. Then I was looking at here as well, this inside bar, but then market breadth got bad and I didn't trade on Friday. Yeah. And then Also, this I just looked at broke down. look at the contract. Seemed like a flag and pole, a very weird and badly presented flag and pole when you look at Yeah. the contracting candles there, right? Now this is just volatility now. There is no contraction. No, 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 no. If you go back to the second. This So one, you right? see after the first breakout, yeah, this one. Yeah, this This one seemed is like a fine. flag and pole, but I didn't see a very decent flag. Yeah, Sorry, in pole, 15 but I minute it did had see a a setup. flag. If you can see, right? This is my setup on Yeah. 15 minute. Mhm. Yeah, this one. Yeah. These two areas were the best to enter though. These I areas. recently entered BSC and exited it out of it. PSU banks. No, Bombay Stock Exchange, BSC, Bombay Stock Exchange, Acha, BSC. BSC. Hmm.
Yeah, this was So decent. this They was said also a weekly setup setup that, as well, right? Or yeah. this right here, if I zoom out So here, hmm. but I wouldn't But enter this anyway. But this is a good stock that moves well. goes well. Okay. That Last time it gave people my were thinking setups it were might go to somewhere here. 3,000. You can see this right here, in this rally. Hmm. Now let's see if it does setup. Yeah. This is a good I high traded area this in stock. futures. Yeah. I bought a future and then traded through. Mm-hmm. Yeah, I'm looking for some positions in futures, but if the market breadth is bad, it's very difficult to make such positions. Yeah, that's why I'm not. Don't trade. Yeah. In fact, I Also can't not, even look futures to be honest. Like, I won't have the margin, right? I mean, it costs you around what? One and a half, or 1.5 to two, depending on Like what, with all stocks, or like, with majority of the stocks. So the ones that I told you, they cost you around 1.5, oh, I thought they 1.6. like one lot is like 3, 4 or something, or 5 lakhs. No. BSC is 3. BSC is 3.3. But Hmm. when you look at Mahindra and Mahindra, or probably, which ones did I tell you? See, that's the issue. Uh, Shriram Housing Yeah. Finance, M&M, This Tech. very large caps, right? Mahindra, Shriram, Titan types. Yeah, They move slow, but the fast ones, right? BSC, they added in futures. yeah, They move fast, but the margin is more. the margin is more correct. I remember there was a time when I just started trading, and I wanted to take some positions in BEL, and by that time the defense stocks were going up, and I didn't Mm. know that the stocks were so volatile. I lost 40,000 just in a single move, and I Mm. was like, oh my god, it's down 40,000. What do I do? And the next day the stock went up 7%, and I was like, had I just not sold, Yeah. I would have made so much more. But yeah, that was a fun learn. So In fact, uh, more than BL, the cash ones went up, like Girza and Masdok. oh yeah. Yeah, these ones went up so high. In fact, this is also a very good stock now that I Yeah. think of it. Hmm. Usually they won't come in FNO because these move too fast and fall also Yeah, fast. yeah, that's very problematic. But in US markets, right, even large caps move really well, like the biggest company in There are no India. circuit breakers there, no. Yeah, I don't that's imagine why. there are. And they're more So liquid, yeah, right? That's why. they're not more. Look at this. So This will have partial share multiple ownership, setups here. really, yeah. Even Hmm. here, these had setups, these bases. Actually, VCP is for US markets. Those It are was less invented manipulated. from a US market trader. Yeah, true. Works well in India as well, but yeah, not in large caps. True. Also, they're not that well managed, right? US, it's very difficult to manage a stock in US. Mm. They do, but it's very difficult. In India, any big HFT firm can actually manipulate and trade markets. Yeah, So the liquidity is low, right? That's why. yeah, and Here you also, cannot. You need mm, even the small caps are like large caps in US. yeah, true. I mean, for a large cap to move, you just need what, 60, 70 CR, not more than that, Yeah, and you can here actually. you need Okay, like billions to move this. yeah, true. I have some more stocks. Hold on, I didn't bother asking about these. Look at Eicher Motors. Yeah, sure. Yep. Breakout, it broke out. Yeah. Yeah, a good setup or no? No, I won't enter here because it already moved. In fact, Oh, even if you entered somewhere here, right, when it sort of made, it would have stopped you out maybe because these are yeah. large caps move. They chop a lot. They work in channels. This actually broke out from this huge weekly channel. True. Yeah, I didn't keep a track of it. What about Nika?
In Nike I was tracking. Tracking, right? It had my setup, Finally. but I avoided Finally. because it was low ADR. Oh God. I mean, this Yeah, is also a good setup this was itself good when you look setup. at You it. could take it. Very, very, very nice. You can still trade it, no? Yeah, you can Look still at, trade it if you want. And it did TP right? as well. It would have done TP. Yeah, even if you trade it tomorrow as well, it there is fair bit of possibility it might go up. Hmm. When you look at it, it seems like a flag and pull, no? Yeah, Probably in a 4 hour or 1 hour chart. it is. Really? Um, Finally, one stock that we can just both decide on. But I won't trade it, right? Because market breadth rules won't accept. I don't wanna break the rule of my own. I see. You can trade it if you Well, want. Like that's why I yeah, but avoided this, right? Just because it was low ADR, I would. If the ADR was at least 3.5, I would have bought this. how is ADR calculated? Any idea? India what? ADR, It average daily calculates the range. I think it calculates the last uh 30 days move. Last 30 days move. Yeah. So it basically Last. calculates the period of one move. You Can you can share me this? What's the name of this you can indicator that you use put the in? DTC this one. Uh, what do you say? This one. DTC IOU AIO Hold on, DTC let me AIO. add. Rohit trades 212. Is that you? DTC. Did you Yeah, find it? okay, yeah, Rohit trades. Yeah, yeah, I did. Oh, Rohit ka hai? wow. Rohit? Oh, wow. There is entry, exits, NPA, EPA. What's Yeah, you can this? change it in settings, whatever you want, like according to So, oh, okay, hold on. How have you put the settings as? We have almost 9 indicators now. Rohit ka hai? He developed that Rohit. Oh, nice. So, what's the setting that you have kept it as? I'm just trying to understand how you go about it. Yeah. Can you say this? Mm, What one were sec. you saying? Oh, no, what's the setting like? You mean the indicator? Yeah, in the indicator. Yeah, you can go into settings here. I use a different one. You can go into settings and change it probably. I'm trying Oh, to contact this Rohit. He made the indicator, right? So one second. I see. Interesting. HTA. He's AFK lol. Okay, I'll when he comes, I will just uh, Yeah, tag you on Chill Talks or Trading Channel, and I'll perfect. you can discuss it there with him Sounds good. about the indicator. Yeah, I have couple more sorry stocks that I wanted to check with you. We'll take First one, one two, is and then we'll close the session. Yeah, tell me. fair, fair. How about SBI Life? SBI Life. Yeah, just two more. SBI Life, Nestle India, and Tata Yeah, Consumers. SBI Life had a setup here, but this Yeah. breakout contraction flag, whatever, Mm-hmm. And and then it it also broke had out. weekly basing, also weekly setup. Yeah, Yeah, but it was a weird weekly base, though. Very weird. What the heck? a little too choppy. Very To choppy. be Yeah. honest. And then what is it? What's the second one? Tata Consumers. Tata what? Consumer हाँ. products. Yeah, consumer is nice. For weekly, I was tracking it. You can see. Even I was Mm-hmm. tracking communications. So Tata consumer is nice for weekly. Positional.
and communications. Communication here, if you can see, right? This is a 1 hour setup. This one, perfect 1 hour setup. I see. But yeah, I'm not tracking this because again, you know, low ADR. I Market think there was a really. up move here. I don't know what catalyst it had. Maybe it posted good earnings or something. But yeah, it has a setup. This Nestle and India also has something similar, if I'm not wrong. Nestle India. Hmm. Yeah, Nestle India also has setup, but it is choppy. It's choppy. It has a setup, yes. It's similar setup to Tata Communication, in fact, if you can see. Yeah. It Yeah, has a if you very. can compare it, right? It's almost same. Hmm. Yeah. But Even this chops, but yeah, this also large since you trade large caps. no, I usually go for IPOs or large caps, so Acha. extreme ends. Yeah. So yeah. All right then. All right. Thanks, Yeah. man. Thanks for Thanks, your man. time. Bye. I'm long Lovely in session. turtles. Nice.